all the supporters who have been supporting Sarthak since long. I, Nitin Garg, thank you, each one of you, for sparing your valuable time to attend this conference. And the theme for this year is Digital Divyang, Enabled and Empowered. Today, as I talk, Sarthak has completed 13 glorious years of its journey towards empowering more than 35,000 persons with disabilities through its 24 centers spread across the country. You will be pleased to know that Sarthak is associated with more than 1,000 hiring partners, 50 plus funding partners, and now you will be even more pleased to know that Sarthak is expanding its global footprints through opening of its London center. So now moving on, in our Indian culture, all good things start on an auspicious note with Ganesh Vandana. So as it is said, सर्व प्रथम प्रार्थना है भगवान श्री गणेश की, क्योंकि इनके साथ कृपा बरसती है ब्रह्मा विष्णु महेश की. So I now request the IT team to please play the Ganesh Vandana. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भाल Anyways, I will continue. Let's see whether our IT team connects to the Ganesh Vandana. So moving on, during this 2-day long event, we will witness 10 brainstorming panel discussions with industry leaders, policy makers, government officials, innovators, researchers, and medical practitioners. Before I move on to introduce the moderator for the first panel discussion, Mr. Atul Bhatnagar, I want to set the context by bringing attention to two aspects.
which are key to enabling and building an inclusive world. So before I move on, can I check with our IT team whether we can move ahead with the Ganesh Vandana or not? So no, I think I will move ahead. So the two aspects which are key to enabling to build a more inclusive world for persons with disabilities in the post-COVID world is technology, and the second one is the CSR efforts of government and corporates. So coming to the first aspect, that is technology. So technology has the ability to eliminate barriers, but when it is inaccessible, it creates barriers. So technology, if made accessible, has the power to not only improve the lives of the PWDs, but also the elderly citizens and senior citizens and all the people in general at large. So to explain this, I will share with you a very interesting example of my organization, Union Bank of India. Till a few months ago, all the staff circulars, policies, guidelines, and other reading content was being uploaded on the intranet portal for all the staff to read through scanned images. So these scanned images were inaccessible to the visually impaired employees. So, but now, as a part of its efforts towards digital inclusion, bank has shifted to text-based circulars. So now even a visually impaired staff member can read the circulars, policies, guidelines, and all the reading content which is made available on the intranet portal. So at the same time, it has not only empowered the PWDs, but it has also empowered the 75,000 plus employees of Union Bank of India, as it has added to their convenience, as they can search, easily search through the contents of all the circulars through the search functionality, which earlier they were not able to use. So this is how the empowerment of PWDs can lead to the convenience of everyone. So in the post-COVID world, as the world has shifted to online mode of working, shopping, and learning, there is a lot which needs to be done to improve the accessibility of mobile apps and websites. So as per CDAC's data, today more than 80% of the data which is consumed through handheld devices. So it becomes all the more important to improve the accessibility of these mobile apps and websites. If we talk of numbers, very less percentage, even less than 5% of all the websites we can say are accessible as of today. So to improve this, the government of India has come out with ICT standards. So we hope that these ICT standards will raise awareness levels among the engineers and developers of mobile apps and websites, and it will help in improving the accessibility of mobile apps and websites, and it will benefit everyone at large. So the second aspect which I mentioned is the CSR efforts of government and corporates. So CSR has played a crucial role in empowering the PWDs. Today, government and top companies like Amazon and Uber have realized that empowerment of PWDs is not only a CSR activity, but it is a business case for them. So in India, now the time has come for the corporates to realize that by empowering the PWDs, it is not only a CSR activity for them, but it is also a business case for them. So now the time has come for me to introduce
Mr. Atul Bhatnagar, who will be the moderator for the first panel discussion, whose topic is Government and CSR Efforts Towards Sustainable Development. Mr. Atul Bhatnagar is the former COO of an NSDC, that is National Skill Development Corporation. Exactly 6 years back, in November 2015, he found his inner calling to become advisor to emerging startups and NGOs in the field of skill development, education, renewable energy, and fintechs. He has been also associated with Pan IIT Reach for India, Pan IIT Alumni Reach for India, Sun Moksha, Prep My Skills, Shri Rural Development Program. So thank you. And now over to you, Mr. Atul Bhatnagar. Good morning and namaste to everyone. Welcome you all to this wonderful session on National Conference of Disability organized by Sarthak. Thank you, Nitin ji, for a kind introduction and setting the context and how accessibility can be provided. Very glad to hear about circulars and being made accessible to people who may have a disability, and about handheld devices and the ICT circulars that you mentioned about the Government of India. We'll definitely incorporate those into our discussion today. And today, as I mentioned, we have a very eminent set of panelists to talk about the government and CSR efforts for sustainable development. I'll provide a more detailed introduction of our panel members when I ask them specific questions. For the time being, I'd like to just welcome Mr. Ranjan Chopra, MD Team Computers, Rashi Natarajan, CEO Cognizant Foundation, Diksha Singh, Group Head and CSR Head of Powerlinks Transmission, Shamin Kutki, Vice President, Corporate Citizenship, Credit Suisse, Rohit Rao, Group CSR Officer from Kotak Mahindra Bank, Ritesh Sinha, Head Projects from CSR HDFC Bank, and Rajendra Jagdale, Director General and CEO, Science and Technology Park. Now, at Sarthak, we've been taking our steps to reach out to PWDs and continue our efforts to empower them with skill development and employment to the extent possible. So the work from home, now that it's a new norm, we also find skill from home for our Divyangjans during this COVID era. We got a mobile app developed called CAP Sarthi, where more than 10,000 persons with disabilities called PWDs have already been registered. We have switched on to an online mode of learning and developed an ELMS to reach out to Divyangjan folks all across India. We are in the process for creating an entire suite of short videos for various job roles, which can be viewed on the mobile, website, or on a laptop. Or more of that later. Let me just start off with, since you have introduced technology being a key enabler for accessibility, and best person I can think of to talk about it is Ranjan Chopra. Now, Ranjan Chopra is the Managing Director of Team Computers and a 25-year-old company with more than 3,000 plus members. After graduating from IIT Kanpur in 1983, he worked in Philips and Apple. He has a keen passion for music and plays the saxophone. You need to keep track of his concert. He might call you once and you'll be very delighted to be part of it. He has built a platform called Zorba, where great musical experiences happen. Ranjan is actually a founding pillar of Sarthak. Over the last 10 years, he has not only provided Sarthak space to establish itself and grow in the Mohammadpur headquarters, he has been paying the rent for it all along. He has also been giving us ideas and encouragement on how Sarthak should find new ways to enroll more PWDs and make a difference in their lives. Now, being a technology person himself, Ranjan, my first question to you is this only. How do you think we can make technology more accessible, especially in this current era where more and more stuff is going to be done by technology and not in a physical place unless it's manufacturing, etc. So wherever
you think technology can be made more accessible. What are your views? What's your advice? So, namaskar everyone, and it's a pleasure to be here on the Sarthak panel. And it's good to see Sarthak going places. And London wali abhi jo news mili, I wasn't aware of that. That's amazing. And Atulji, it's a pleasure also to know that you're part of SSRDP, Shri Rural Development, and so that's very good news. टेक्नोलॉजी जो है हमारी सेवा के लिए, और जैसे सार्थक सेवा कर रहे हैं दिव्यांग एंड पीपल हु नीड सपोर्ट, टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज्ड वेरी वेरी इफेक्टिवली इन मेनी एरियाज. सो पहला एरिया जो मेरे दिमाग में आता है वो है इन स्किल डेवलपमेंट. आप तो अतुल जी स्किल डेवलपमेंट में रह चुके हैं. द especially reaching places, remote corners. Internet is present in most corners of the planet. तो इंडिया में हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह है, अच्छी क्वालिटी का, और इम्प्रूव होता जा रहा है थैंक्स टू पीपल लाइक एयरटेल एंड रिलायंस जियो. अफोर्डेबल भी है और ये अवेलेबल है. सो कनेक्टिविटी है. जब कनेक्टिविटी है तो स्किल्स के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई भी चीज अगर सीखना चाहें तो वो सीख सकते हैं हम जहां भी बैठे हैं. वो स्किल एडटेक में, एजुकेशनल टेक सेक्टर में बहुत इंप्रूवमेंट्स हुई हैं. हाउएवर आई फील इट कैन नॉट रिप्लेस द फेस टू फेस. तो हमने बहुत कैंड कोर्सेज, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कोर्सेज, बना के लोगों ने डाल दिए. जो ज्यादा फॉर्चुनेट है बड़े शहरों में, बिग सिटीज, दे कैन अवेल ऑफ much better facilities. But even in remote areas, I feel and now increasingly learning is available in most languages thanks to people like companies like Google. उन्होंने बहुत सारे languages में training is available, and hence एक factor as a support. So it is not going to replace face to face. It is not going to. I am involved in digital literacy along with Shri, Himalayan Unnati Mission, in jails, people who don't get, and also in rural schools. इस सेक्टर में जो हम बात कर रहे हैं, people with disabilities, I think we need to tailor those courses, work along with companies, now very large company like Byju's. And I am sure they will be very happy to kind of create the necessary material for tailoring it to our needs, our audience, their needs. तो एक तो learning में बहुत ज़्यादा है. दूसरा जो है in movement, people who have issues in vision and visibility. Movement में बहुत अच्छे apps आ गए हैं, and technology has developed. Now this has to be brought. I am sure Sarthak is doing its best, and a lot more can be done. And I will be very happy to participate as an organization in bringing the latest of hardware, software and services. ये तीन चीजें चाहिए. Hardware चाहिए, software चाहिए, services चाहिए. तीनों चीजें, all three of them, Team Computers will be very, very, will come forward and support people them. So, in terms of mobility, in terms of moving around, this will play a very important role. And the third part is, of course, in getting people jobs. Sarthak के जो core mission है, which is to train people and then get them jobs. And जो काम करने की, जो self-respect, what we can earn out of working and out of being a worthy contributor in any field, doesn't matter, whatever field. And we've done a lot in Sarthak. I know in hospitality sector, I am also a part of that sector. A lot of Sarthak graduates work in this sector. And to support them in their working so that they can take on higher value jobs.
So, for example, why can't a Sarthak graduate become a CEO of a hospitality company? Why can't a Sarthak graduate lead a company like Cognizant? I was very happy to see Cognizant participate because they've been co-partners in this journey very, very early, many years ago. And why can't they take on leadership positions? जरूरी नहीं कि हम एंट्री लेवल काम सार्थक के जो सो नाउ वी नीड टू यूजिंग टेक्नोलॉजी अप द बार, वो कहते हैं ना स्टैंडर्ड्स को और ऊपर बढ़ाएं, अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाएं हम सार्थक ग्रेजुएट से। हम सीईओ, सीओ, सीएफओज और दूसरे जो लीडरशिप पोजीशंस हैं वो ले सकते हैं हमारे ग्रेजुएट्स and using tech. And I'll be very, very happy that team computers being used by Sarthak. Another piece of good news I wanted to give, we have hired a full-time person now to look after our foundation. Foundation के हमने 3 पार्ट बनाए हैं. One part for animal welfare, one part for plants welfare, so foresting, setting up oxygen factories. And the third part is, of course, for human beings, jahan Sarthak comes in and, so Sumit Kumar ji hame join kar rahe hain 1 January se, and he'll be working very closely with Sarthak and seeing how team computers can be used and our facilities, our abilities can be used and resources can be used for this sector. So, अभी तक हमने थोड़ा टीम कंप्यूटर में पैसिव रोल किया, सपोर्ट किया, लाइक यू शेयर्ड ऑफिस है और फैसिलिटीज हैं. वी कैन प्ले अ मच मोर एक्टिव रोल in helping Sarthak graduates move to the next level, and I'll be very happy to do that. So thank you for giving me this opportunity, and I'm delighted to see all the panelists here and to Sarthak grow. For me, Sarthak has been like a temple, एक मंदिर है जहां हम सब जाके पूजा करते हैं, हवन की सामग्री डालते हैं. एंड ये हम लोग सब कितने फॉर्चुनेट हैं, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि इसमें थोड़ी सामग्री हम भी डाल रहे हैं इस यज्ञ में. थैंक यू. Thank you, Ranjan. It's such a delight hearing you and your views, how positive and how you keep setting the bar higher. You have just told us about how why not a CEO in another organization. Well, to start off with, I'm still in awe of Dr. Jitendra Agarwal. He is a visually impaired person heading Sarthak for the last so many years. So that glass ceiling has already been broken. That can a CEO be a PWD? Yes, very much. And I appreciate his vision more because his vision is better than mine when he sets out his goals for the organization. And many more CEOs. I will now ask Shri that question in due time and how she plans to get her boss as a PWD. So what kind of steps you can take. In the meantime, I just wanted to play a small video. This is regarding the Cap Sarthi app. So over to the tech team. Can you please play the video on Cap Sarthi? Cap Sarthi is a one-stop solution for information and services for people with special abilities designed in collaboration with Capgemini and Sarthak Education Trust. We intend to touch the lives of thousands of differently able people and empower them digitally, economically, and socially with special focus on people in the rural area. Namaskar and welcome to the second launch of Cap Sarthi version 2.0. The previous version was launched in 2020. The application takes into consideration accessibility requirements of all disability categories. Initially, it was available in 6 Indian official languages, namely Hindi, English, Tamil, Telugu, Kannada, and Bangla. It is available both in Android and iOS devices and is also
available to people without smartphones. This can also work on online and offline mode. The new web version of the mobile application Sarthak also caters to web content accessibility guidelines, that is WCAG-AA level accessibility, integration with Open Authorization Cars 2.0, Rozgar Sarthi, Gyan Sarthi, and Sarthak websites. In addition, it also caters to 5 more languages such as Marathi, Punjabi, Odia, Malayalam, and Gujarati. The new version is accessible to all types of disabilities. For example, person with low visions due to blindness can use screen readers. Sarthi 2.0 web portal gives the best accessibility experience with screen readers and Chromebook screen access to all. If any user will install Chromebook extension in Chrome browsers, then that can hear the screen reader and convert it into text. The theme of the scene can be changed to various color schemes as per user delight. It enables auto alerts to users and teams, life cycle tracking based on age groups of the persons with disability. It has inclusions of service providers such as corporates, NGOs, NPOs, civil society, and other partners. It has feedback and query tracking systems with advanced admin panels of user management. Let's take a sneak peek. Using the platform, people with disabilities or their family members can access relevant information such as information about government schemes, policies, provisions such as disability certificate, pensions, transport concessions, reservations, and others. Details of governments and private and non-profit service providers in areas of health educations, skill employments, and rehabilitations. Details of national and international scholarship programs, details of fees or concessions on assistive device providers, online resources such as Braille Online, audiobooks, details of assistive devices, and matrimonial services. There would be information on upcoming events such as assistive device camps, job fairs, and others. Various services support will also be extended using the platform, namely services such as counseling, guidelines, early intervention, education, skill development, employment, career growth, and career continuance supports. There will be parents and parenting counseling guidelines to support parents of children with special needs. Engagement sensitization, knowledge sharing with change makers and aspirants in disability sectors. Updates of latest development in disability sectors such as assistive devices, judicial orders, government provisions, research and development. The web portals, the user can create profile to see personal information and also can edit from here, accessing latest updates of various required and essential information at a single platform. The user can call us to give feedback. The user can actually find a suitable match using the matrimonial services from here. If you are a change maker, login pages are provided to sign you up. Change makers can provide various services to persons with disabilities using this platform, having options of assistance, employment, advice, and much more. Various counseling and guidance videos are provided to assist the change makers. The application continues to be in the app stores and the web portal link is provided below. Thus, feel free to download or access this new world called Sarthi 2.0. Thank you so much for listening. Namaskar. Thank you. As Ranjan just pointed out, the hardware, software, and services are required to provide more accessible information to our PWDs. This is one of the, let's say, samagri that Capgemini has added. So thank you, Capgemini, for this wonderful effort. And along with Sarthi, I'd just like to also inform the panelists and the viewers that we are in Sarthak creating short videos to be placed on mobile app, to the ELMS system, to be there on our website. Again, some of them can be for information, some can be for giving them better opportunities,
and some of them are for e-learning itself. So I'd like to play a small video right now, and then we'll carry on with the discussion. Everybody seeing the screen, please? You're good to go, sir. Yeah, okay. No limits, no stops. Race ahead in your career with Sarthak. Hey buddy, what's new? Veer, I'm keen to hear all about your new job. It's very exciting. Hey Arun, you should apply too. They are looking for more people. Veer, as you know, I have a problem moving from one place to another due to my disability, so I can't do a standing or field job. But they are looking for people in CRM as well. But Veer, I'm not confident about interacting with customers on the phone. Arun, there are two types of CRM jobs. One is voice process and the other is a non-voice CRM job. Here you handle customer queries and complaints via webmail, email or any inbuilt chat facility. So, the CRM non-voice person only works through chats and does not handle calls. Yes Arun, you will be just right for this job role. Your disability will not be a problem. Veer, this sounds perfect. Let me send you my CV. Arun, all the best for your career journey. Sarthak, empowering the differently abled. Thank you. Now, just one more to add to this. What kind of job roles we are looking for, or what kind of videos we are looking for, again, to set some minds thinking. I just want to show a small presentation, just one slide, Italy. Yeah, can you see the slide, please? You're good to go, sir. Yeah. So these are the kind of videos that we would like to get made from various sectors, and you can add more to it. I mean, that's the purpose of showing this here. And of course, we would require support to get these made in terms of funding, but you can see your own sectors being displayed here. And some of these can yield, say, fresh talent coming in from Sarthak. And using our resources, like say the mobile app and ELMS, we can train people sitting from where they are for specific job roles, maybe with specific requirements that you may have under these categories, and you can read them on the screen itself. So this way we can actually, let's say, groom talent in whichever part of India it may be there, and you can then proceed to employ them accordingly. So now I'd now like to move on to the next speaker. I'd like to now invite Rajshri Natarajan, CEO of Cognizant Foundation. First of all, Rajshri, congratulations for winning the CSR Impact Award given out a few days back by CSR Box. So clap for it. And Rajshri is an IT industry veteran and a social impact leader with nearly 30 years of global experience. She plays a key role in an overarching charter of the foundation, defining CSR strategies and goals, managing operations, communication, and relationship with a broader set of diverse stakeholders. She is a passionate learner, trainer, and speaker in industry forums. Rajshri obtained her master's degree in electrical engineering from IIT Kharagpur, and she has a Six Sigma Black Belt and a certified executive coach. So Rajshri, since you have proven your worth in creating impact, how will you contribute to empowerment of Divyangjans in this era of hybrid learning and working? And added to that is Ranjan's wish of having, why not a CEO in Cognizant? So over to you. Thank you, Atilji, and thank you, Ranjanji. Really that dreaming big and breaking the barriers, you've set the context and the tone right. And first of all, I'll start by congratulating Sarthak for completing 13 years, but it's not just the 13 years, the 24 centers, 50 plus funding partners, 100 plus placement partners in particular.
We wish that your network keeps growing so that this journey for Divyangs kind of is getting bigger and bigger. And like Atulji pointed out that we should actually have top posts, like we should have more of Dr. Jitendra Agarwal getting created out of Sarthaks, right? So that's what we kind of all aspire for. And before kind of I move on to that question of what it takes to become a CEO, of course I have some perspectives and I would like to actually share and probably invite you all to kind of add to that perspectives. Nitin beautifully mentioned that the technology, the role it plays in inclusive education as well as in mobility for improving the day-to-day lives and as well as for skilling. One more thing I wanted to add on the technology side is that we should leverage, and since you mentioned about the CSR box award, I'm grateful, my heart is filled with gratitude with all the partners who made it happen, how we can actually leverage technology in the preventing disabilities in the first place. Because today we are still living in a country where more than 75% of the world blind people are in developing countries, and close to 1/3 or 1/4 of world blind people are in India. And about 80% of that is actually avoidable, which means we are not doing interventions on time. And technology can play a big role in taking these interventions accessible for people, creating awareness and also affordable. So the first job for technology is actually to prevent it in the first place, to provide that equal opportunity to everyone. Now that, of course, that there are people like who are unfortunate who miss that, or like even the things that could not be prevented or avoided. Now, how do we build that inclusive society, and not just for giving them a job and things like that? There is so much of a potential to tap into. The inspiration, from people like Dr. Agarwal, goes a longer way. Like you rightly mentioned, he has a greater vision than any of us. We are vision challenged, and so how do we actually get them to boost? I think I have a feeling that it has to be started very systemically. I mean, we cannot do that suddenly. All these barriers start from the early age, starting from, as I said, the access to the healthcare. The second is an access to a quality, inclusive education, because I don't believe that you can have a quality education unless the education system is inclusive. So how do we build those inclusive education? Technology is making it even more possible. Technology is kind of making that kind of a dream possible. So we know that the COVID pandemic has actually disrupted the functioning of the schools, right? Especially impacting the students from government schools more because they were not digitally inclusive. Like what the others could afford to have with all the Baidus of the world. I mean, it could not be accessible, not only because of the software or the content, but the basic devices and things like that. So how do we actually build a very digitally inclusive system, and as well as ensure that our education system is inclusive for persons with disabilities? That is very important. We need to create resources. We need to capacity build for teachers. We've talked a lot about inclusive as part of national education policy, but then even the special educators, if you see, the ratios are abysmally low. So we are making it inclusive just first as a physical infrastructure, getting them admitted and enrolled, but then it has to be inclusive all the way, because leaders are created at a young, I mean, it needs to be nurtured from right from the young age. You need to provide them the confidence, you need to provide them that all that inculcate the values and the personality and the 21st century skills, and that needs to be inclusive for all students and all children. So that is very important, and definitely I humbly believe that leveraging digital technologies can actually make it possible. And I mean, just like Sarthak, that we also work with people like specifically promoting scholarship for visual impact. One thing that we find was that it's not just about finishing the degree, but the confidence with which they walk out after the degree. That makes a huge difference. That we believe that particularly for persons with disability, it cannot be only the education in the classroom setting. It need to be complemented with skills that are necessary, starting from mobility, employability, and as well as building in their career. We need more inspirational stories to come from visionaries like Dr. Agarwal to go back and reach to these children. So that we are doing a couple of flagship programs around that area where we leverage digital technologies specifically to create capacities in schools so that we can include children with special needs and so on. And second is even there are certain jobs or certain streams that is completely inaccessible
For example, why not computational thinking in children for children with vision impairments? Like why are they getting missed out in STEM education? Why are they getting missed out in certain streams altogether? It's our responsibility, in fact, to kind of ensure that's kind of made available for everyone, right? And then finally, we cannot be we have to dream big. We cannot be skilling people just for livelihood anymore. Okay, we have to skill people. We will have to nurture the confidence, skill, and everything for playing such a leadership role. Why can't we kind of build that? Like for example, even recently, I think Dr. Raji was also there for a launch on December 3rd. We launched a program for Tech for All. This is actually, we've been always dreaming using technology as part of our skilling, but we are preparing them for some role. But like you mentioned, how can we prepare them for a tech role? Why can't the tech sector itself be inclusive? The tech jobs, the technology tracks, be it in IT or technology-enabled careers. So all those high-paying, high-productive careers also we need to attract. And finally, how do we build them to the CEO level? It needs actually a multi-stakeholder, like a collaboration. It's like definitely a lot more sensitization need to be happened at the workplace, and we need to ensure that people are actually mentored and coached right through the journey. I mean, I'm not saying only because there are people with the persons with disabilities is required. It is required for anyone to grow in the career and to go to the leadership level. So you need that mentoring and coaching. We need to create ecosystem for such mentoring and for such coaching, and where we bring in people that, it's not that the people, like you rightly mentioned, it's not that the CEOs or that kind of a role is inaccessible. It is happening, like in the development sector, if it's happening, why can't it happen in the business and the corporate sector, right? So it's, in fact, it is a lot tougher, having sailed through both the sectors, I can say it's a lot tougher to be in the development sector, to go through all these multiple challenges and be a leader there. So we need to actually promote what it takes to be a tough leader in the development sector and how we can actually take it to the business sector. And lastly, but not the least, we should also look at from at a younger age. Entrepreneurship is not nurtured systemically in the country. I mean, even the people that who had been traditionally entrepreneurial because of their family background and so on, some of the jobs, there is no, at least from the eyes of the society, there are differences in the way in which certain jobs are seen. And therefore, people are, there is a herd mentality of getting into the job and getting into the job market in the mainstream skilling. We should also look into, into our skilling programs in a way that where we nurture these entrepreneurship. Why should we wait for someone to become a CEO? Why can't they start a career as a CEO, right? We should also look at those. And that would be my humble submission and perspectives, for others to add on. I'm sure that, if you all put our mind together and if you all put our commitment and will together, and we are there. I mean, as Ranjanji mentioned that we've been there, keeping inclusion as a focus. People like, Cognizant, from the beginning, we kept inclusion as a focus. In fact, a two stream. One is preventing disability on the healthcare side, and again, making it as an inclusive society when it comes through education and skilling. So across the three sectors of health, education, and livelihood, we want to stay focused and stay committed for inclusion and making technology. Like you said, technology is something need to service us, right? So we need to ensure that the technology do better services for an inclusive society. So let me stop there. You are on mute. Yeah, can I? So Rajshri, I'm just going to add on to what you shared. I love that part about skilling for becoming entrepreneurs, supporting them. And I'm doing a bit of that in many capacities, having started off with a very small amount of money. And, so I know one of the things we're doing with Shri, the Himalayan thing is rural entrepreneurship. So some very micro ones, beekeeping, for example. I didn't know that for as little as 40,000-50,000 rupees, we can actually get in a rural area a family kind of live off that. They will generate honey, and the honey can be sold, organic honey, and they can
The other project we are looking at is homestays. I have a house in the hills or a house in a remote area. Can that be converted into high quality hospitality? People can come, and now so these are a couple of ideas and there are many more we are working on. सार्थक के जो बच्चे हैं अतुल जी, उनके लिए ये कर सकते हैं। ये आइडिया बहुत अच्छा, मैंने कभी सोचा नहीं इस डायरेक्शन में। राशि जी ने बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया है इस एरिया में। I'll be very happy to kind of contribute, and like what she said, why wait for being CEO after 20 years when you can start off building a business? Could be a small business today, but could grow much larger. So I'm raising my hand as to support this. Please make a note of that. Wherever it's the right time, we can take that up. Thank you. थैंक यू रंजन। और ऑडियंस से एक दरखास्त आई है कि हम लोग थोड़ा हिंदी में भी बोलें, तो हिंदी इंग्लिश का मिश्रण के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ टर्म्स होते हैं जो इंग्लिश में ज्यादा समझ में आने लगे हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप वैसे तो कहने को तो उद्यमिता की बात होती है हिंदी में, लेकिन थोड़ा मिक्सचर के साथ आगे बढ़ेंगे। एंड राशि, थैंक यू वेरी मच। आपने बोला कि भाई अर्ली इंटरवेंशन, जो अगर अर्ली स्टेज में अगर डिसेबिलिटी को डिटेक्ट कर सकेंगे थ्रू टेक्नोलॉजी, तो बहुत बढ़िया बात है। मैं बीच में एक स्टार्टअप की बात हुई थी जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ यूजिंग टीवी का एक माध्यम लेके वो ये पता कर सकते थे कि बच्चे को कोई सेरेब्रल पॉल्सी जैसी कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, तो कुछ वो एक्सरसाइजेस भेजते थे सेपरेटली पेरेंट्स को, और पेरेंट्स उनको कराते थे और उसका वीडियो ये लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो देखते थे। उससे उनको मालूम पड़ जाता था कि हाँ, अगर कोई प्रॉबिलिटी ऑफ डिसेबिलिटी है तो फिर उसके आगे बात करें। आई थिंक इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस अभी तो अवेयरनेस की बहुत बात है कि इंडिया में जैसे ना डिसेबिलिटी को डिनाई करते हैं कि नहीं है, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे बच्चा तो ऐसे ही होता है, उसका सब ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, होना भी चाहिए कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बार जरा टेस्ट करा लें तो मालूम पड़ जाएगा, और मालूम पड़ जाएगा तो जरूर ठीक हो सकता है। लेकिन अगर मालूम ना करें और हम लोग सोचते रहे कि नहीं नहीं ये तो हमारे घर में डिसेबिलिटी है ही नहीं, तो कैसे होगी इस बच्चे को, तो वो फिर उसमें देरी हो सकती है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और आपने जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात की, और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स थ्रू टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, कि भाई आप किस तरह से इनको आगे बढ़ा सकेंगे, आप इन सब का क्योंकि अगर टीचर अच्छे नहीं होंगे तो कैसे अगले सेट ऑफ स्टूडेंट्स वो कैसे इतने अच्छे होंगे। तो अब मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहूंगा, शामीन जी, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप एंड फाउंडेशन क्रेडिट स्विस में काम करती हैं। शामीन जी इज रिस्पॉन्सिबल के वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, और उनका हैंड्स ऑन कम्युनिटी एंगेजमेंट और स्किल बेस्ड वॉलंटियरिंग के लिए। उससे पहले वो फिलांथ्रपी में थी और 12 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन रिसोर्सेज एज एचआर बिजनेस पार्टनर और लीड रिक्रूटमेंट फॉर मुंबई। शामीन जी 11 साल से इस सब में काम कर रही हैं और 3 साल से ह्यूमन रिसोर्सेज में पहले काम कर चुकी है एडेलवाइस में। तो शामीन, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके पास तो एचआर और सीएसआर दोनों का बड़ा अच्छा मिश्रण है, और किस तरह के जॉब्स ऐसे हैं जो पीडब्ल्यूडीज के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अब वर्किंग फ्रॉम होम तो एक पॉसिबिलिटी क्या अब तो नॉर्म हो गया है, और इस मामले में लेट्स से कोविड ने बड़ा एक तरह से चेंज कर दिया कि भाई अब जब घर से काम कर सकते हैं तो क्यों नहीं पीपल विद डिसेबिलिटी काम करें रादर देन एनी अदर पर्सन जो पहले काम करता था उस तरीके जॉब पे। तो आपका क्या कहना है? ओवर टू यू। Thank you, Atulji. Thank you for having me over in this panel, firstly, and thank you to Sarthak. I think, there's continuous good work that, Sarthak does, and I'm very pleased to be part of, the program and this initiative. I'm sorry, my Hindi is terrible. I think you guys will crack up if I start talking in Hindi, but I think I'll just continue with English. So sorry about that. No, I think being in HR helps, and I know that Credit Suisse always
aims towards building a very inclusive culture, and also is aiming to provide access to all individuals. And this is not just people with disabilities. The whole diversity agenda for the bank is fairly wide. And I think, as part of corporate citizenship and foundations team, we continuously aim to provide resources, provide access through our programs to individuals who come from underprivileged backgrounds, who come, with all kinds of disabilities, physical disabilities, or even intellectual disabilities. And we are providing those programs, and possibly even supporting them to build individual financial entrepreneurial skills, vocational skills development, so that some of these first generation individuals can actually have access to education, access to some of these skills programs, and actually get the employment opportunities that they deserve. So CEO is, of course, an aspiration for all of us, not special for just individuals with disabilities. But I think we all know we need to start from scratch and start small. And slowly we will get up there is what I would say. So I think just in terms of even our focus area and our portfolio, skilling is absolutely extremely important. This is also our global strategic focus area, which includes vocational skills and entrepreneurship skill development for individuals. And in fact, along with Sarthak, we also started off many years ago with a partnership, which is with Jai Vakil Foundation as well, who does skilling for individuals with disabilities. So very proud to be part of these initiatives. I think in addition to that, I think just not just skilling, but even access to education, I think that in itself is also extremely important. And that is also something that we will focus on, which is right from the start, right from primary, secondary education, as well as it goes towards higher school education, which is, and even post-grad. I think we're also kind of very pleased to start off with programs which are towards scholarships, which includes all individuals. I think we are currently not discriminating on any grounds, especially for those who are unable to access this at the moment. And just in line with what was even mentioned earlier, which is also providing financial literacy for some of these individuals because they are first generation learners. I think financial education is another focus area for us, and we provide financial literacy programs for individuals in rural areas, in semi-urban areas as well. And this is for women who need to learn how to save, as well as for individuals who could be, first generation micro entrepreneurs as well, and start off small businesses, as Ranjanji mentioned. And I think the other piece is, having all of these initiatives, but also thinking about the environment and the entire community as a whole. So I think our programs are also taking into account, ensuring good health, ensuring sanitation facilities for some of these kids, youth who come into schools, so that they continue, right? And they just don't drop out in the middle because of lack of certain facilities that are available to them. So I think Credit Suisse really focuses on the overall well-being and tries to really think about a more inclusive culture in the organization, as well as to provide opportunities externally to individuals and give them that access in the society, which is, of course, extremely difficult at the moment. And COVID just makes it tough, and COVID also has created a number of opportunities that possibly we didn't, think about today. So
yes, technology has brought us much closer and giving those opportunities to all of us individuals and also us learning as well. So thank you. Sorry, long answer to that. Thank you. Thank you, Shamin. You brought out a very important point, environment and good health. That आजकल बहुत ज़्यादा important है because of the pollution etc. that लोग देख रहे हैं. मैं अभी भी recently एक workshop में से आया हूँ. वहाँ पे डॉक्टर कुमार ऑफ मेदांता उन्होंने ये 2 lungs की उन्होंने फोटो दिखाई. And this was and saying कि पिछले 4-5 साल से वो देख रहे हैं कि मैं हर दिन वो तो बड़े मतलब नॉर्मल वे में बोल रहे थे कि मैं हर दिन 3-4 लंग्स तो काटता ही. और उन्होंने कहा कि अभी तक तो मुझे केवल पिंक लंग्स दिखाई देते थे या फिर ब्लैक लंग्स दिखाई देते थे. ब्लैक लंग्स यूजुअली स्मोकर्स के होते थे. अब कहते हैं नॉन स्मोकर्स की भी लंग्स ब्लैक हो रहे हैं. एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट कि और वो ही नहीं, अब तो वो जैसे नवजात शिशु के अंदर में भी वो बातें आ रही हैं. हम लोग खुद ही कुछ 10-10 सिगरेट एवरी डे ब्रीथ कर रहे हैं, स्पेशली इन एनसीआर में. इस समय तो मुझे रंजन जी का एनवायरनमेंट देख के बड़ा मन कर रहा है कि आपके साथ आ जाओ बैठने के लिए, लेकिन मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे इस तरह का स्काई नहीं दिखाई देता. तो हमको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको टेक्नोलॉजी के थ्रू स्पेशली सो दैट अगर ये डिसेबिलिटीज जो कहीं अब जो जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं, और WHO का तो मानना है कि 1 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड हैव सम डिसेबिलिटी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसेबिलिटीज के डेफिनेशन फ्रॉम 7 डिसेबिलिटीज से 21 कर दिए, 21 डिसेबिलिटीज. जब 7 डिसेबिलिटी की बात होती थी तो एक अनुमान था कि 2.68 करोड़ people have a disability in India. Now that figure may be 8 to 10 crores. So इतने सारे लोगों को इस अगर डिसेबिलिटी से जूझना पड़ रहा है, ये मे बी उनकी तो गलती है ही नहीं है, ये तो हमारे एनवायरनमेंट की गलती हो सकती है. और इस एनवायरनमेंट को हमको ठीक करना बहुत जरूरी हो रहा है. तो हमारा डेवलपमेंट शुड नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ एनवायरनमेंट. वन थिंग आई वांटेड टू ऐड, हम लोग सब जैसे एनवायरनमेंट की जो बातें कर रहे हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल फ्यू थिंग्स लाइक प्लास्टिक्स, सिंगल यूज प्लास्टिक्स कम करें या बंद करें. दूसरा, जो अगर हम पोल्यूशन कम करना है, और आई डोंट थिंक दिल्ली गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल डज द राइट थिंग्स बाय बैनिंग एवरीथिंग और मेकिंग एवरीथिंग फ्री. दैट इज नॉट द राइट वे. हम अगर फॉरेस्ट बनाएं, जंगल उगाएं, और जंगल उगाना मुश्किल नहीं है, छोटी सी जगह चाहिए, उसमें भी जंगल उग सकता है. और यही जंगल पानी भी इकट्ठा करेगा और हमें साफ पानी भी देगा, साफ ऑक्सीजन देगा. ऑक्सीजन फैक्ट्री की जो कॉन्सेप्ट है, तो इस सार्थक के जो बच्चे हैं जो इस सेक्टर में हैं, यू नो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू इंक्लूड ऑल ऑफ देम जो इस सेक्टर में काम करना चाहें. और हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं. देयर आर कंपनीज विच आर इन्वॉल्व इन अफॉरेस्टेशन. हम लोग जंगल काट के खेती करते हैं. उल्टा काम करना, जहां खेती नहीं हो सकती वहां तो जंगल उगाएं. और मुश्किल नहीं है ये उगाना, बहुत सारे टेक्निक्स हैं. हम लोग जापानीज मियावाकी मेथड यूज कर रहे हैं, और भी टेक्निक्स हैं. और उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जंगल के साथ साथ हम ऐसी चीजें भी उगा सकते हैं, जैसे ट्रफल्स. शामीन जी को पता होगा, ट्रफल्स बहुत महंगे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं. इटली में, फ्रांस में मिलते हैं. हम यहाँ उगा रहे हैं पहाड़ों में, जंगलों में. तो और वो महंगे बिकते हैं. तो जो जंगल अगर हम बनाएंगे ना, हमको ऑक्सीजन देगा, वो साथ में हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, मतलब हमें रिटर्न भी मिलेगा उसका. तो थैंक यू. I mean, sorry, I don't want to deviate from the topic, but रंजन जी, आपके लिए क्वेश्चन आंसर बॉक्स में एक उत्तराखंड का क्वेश्चन है which is related to farming and environment, और I will come back to you on this when we get into the question answer session also. तो आप उसको देख लीजिएगा. और ये बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट पोजीशन ये भी आ गई कि देखिए सार्थक के ट्रेनीज किस तरह से एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं. तो दैट्स अ वेरी न्यू थिंग एंड वी कैन टॉक मोर अबाउट इट. I'll now come to Rohit Rao. He heads the corporate social responsibility function for Kotak Mahindra Group and is designated joint president and group CSR officer at the Kotak Mahindra Bank Limited. Rohit is amongst India's most seasoned communication and outreach professionals with close to 4 decades of
experience spanning banking, business journalism, PR consultancy, corporate communication, and sustainability reporting and CSR. Rohit holds a bachelor's degree in commerce from the University of Mumbai, a diploma in business management from the Indian Merchants Chamber, Mumbai. So, Rohit, what contributions have been made in disability sector, and what is the roadmap for Kotak Mahindra Bank for building a nation which is inclusive, empowered, and accessible? Over to you. Good morning, everyone, and thanks for this opportunity to speak. Before I speak, I see a hand raised by Mr. Ranjan Chopra. If he has to say something, I will take a pause. Okay. While thanking Sarthak for organizing this, it's a brilliant move, and we should have this conversation of like-minded people, and these conversations will throw up ideas. It will motivate more and more people. I firmly believe, from my experience in banking and journalism and PR, the word of mouth has more weight. The shared experiences makes a lot of difference than a curated communication. It's we will be inspiring each other to do more and more, and the development sector work itself, and I'm actually, one thing which I really like about Mr. Modi is giving the word Divyang, the divinity, instead of calling them disabled or physically challenged. It's not. That's really inspirational. That's the first word by which we are giving them respect, divine. We are fortunate to be being born normal, or our children are normal. There's an element of luck or destiny. Having said this, which makes me emotional, and this thing, I have many colleagues and friends. Incidentally, the children are either, one or two of them are either a Down syndrome or autistic, or one of my colleagues' daughter was spina bifida, and she was very lucky that waist down she was paralyzed, but waist up she was okay. So I got her in my team, and because of just to bring seriousness to Kotak, to look at Divyang in a very, very positive manner. The CSR policy philosophy, and which is my personal also, is Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudha is earth, and Kutumbakam is family. We are one family. Why it is important, and one of the CSR Act itself is a brilliant move by the government, whether it's UP or NDA, I don't care, to make us responsible, sensitive. You have to coexist, and every member of the family has to grow and lead a respectful life. I can't say I'm healthy but my hand is not healthy. So every element of me has to be healthy. So if my every element has to be healthy, so there is no discrimination. I'm healthy, I am Ahmedabad, I'm poor, and I'll get on. And we are not into the lip service. We should not be into lip service. So if you look at our the CSR ethos and approach, our education and livelihood projects are aimed at addressing urban poverty. So taking this leap further, we started a journey. Our founder, MD started, Mr. Uday Kotak sometime in 2006-7 with Kotak Education Foundation. Now we have extended this to many sector, healthcare and all, where addressing the gaps. Ultimately, it's the well-being of people. We do deep surgical work. Till about 3 years back, we were focused on going a mile deep and not mile wide. But for the past 3-4 years, we are continue to go mile deep, but go wide as well. So what we have done is we have extended this entire concept to our Divyang family members also, both internally and through CSR partnerships. So we have partnered with dozen this thing. Sarthak, we got introduced during COVID times, and we started a journey. And our journey with all the NGOs who work in the this disability or physical challenge sector areas goes long way.
We support National Association of Blind, that is in the visually impaired, for the past 8-10 years. Ganga Foundation, Ganga Trust Foundation, Chennai, where a batchmate of my chief marketing officer Karthi Morshan, he had a fall first from I am Bangalore, and he was paralyzed, waist below, wheelchair bound. So he started a foundation, he recovered and all. We are supporting him, where he is doing a brilliant thing. This respect, dignity. We are becoming MBAs, not just the entry level jobs. In the army, there's a Pune center, launched during Indira Gandhi's time, 1974, and nothing was done after that. There were some 8,500 beds where you need special beds for paraplegic and quadriplegics. So we did that about 4-5 years back. The entire setup, their life, they take a bullet for us, let us make their life better. And those people, they can't survive. Their mortality goes up if they're outside there, because the army people can't exist in a civil world, because there is no people support, for if there's a wound, they're paralyzed. So that is, so I can give a laundry list of NGOs that we partner: Youth for Jobs, Deeds, Ganga Trust Foundation, a sort of a Disha Foundation, Nai Disha Foundation, you name it. I will go to the what we do for employees. We have set up a disability and inclusion council last year to take it to a more serious level, headed by a group management council member, that is a quasi board at Kotak Mahindra Bank, Shanti Ekambaram, where we are institutionalizing employment. We have reached out to Sarthak also. They got given us 30 odd this thing, HR को list दिया है हमने. We are working on that. Likewise, each of the NGOs at a level, we are doing development sector work, and HR has come on board. So it's my dream and passion and personal commitment, and I'm proud to say it has been a journey. See, the challenge for us is we are a regulated entity. Qualifications and the ability to deliver the job in a required manner is important. So I tried, volunteered. I took up a cause personally in my innings here. Why not, like in a wheelchair bound, if I have a chartered accountant, and we have some that, or an MBA, he should be in a leadership role. He should not be working in a call center. Today the technology has gone so advanced. We are talking of artificial intelligence and this thing, robotics, and the visually challenged people are far sharper than the normal people mind. And today the technology is like voiceover, facial recognition. So can we not get some brilliant minds? And those are the areas we are working on. So the new normal has taught us the whole approach of doing business, including personal life, is different. And the Zoom technology or virtual meetings and all, the challenges of traveling is reduced for them. They don't have to go for work. Work will come to them. So that is the model we are working on. We are still doing baby steps. But the way the Kotak franchise has worked, we do deep work and we do sustainable, even with CSR partners, and Sarthak will agree. We don't just write the check and my job is done, I'll feel good. That is the hygiene. They give us an opportunity to fund. That is the beginning of the work association we start. And while I'm in serving mandatory leave, my Himanshu was very keen that I said I will attend, because this is my personal. Okay, while I might represent the bank, because I want to share the story. I want to share the story of Dr. Jitendra Agarwal, and the NGOs that have been incubated and started by people, because they've had an experience, they have a better chance of becoming large enterprises, a sustainable organization, because there's a passion, there's a commitment. It's a prayer for them. मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं दूसरों की दुविधा कम करूँगा. So we look for those kind of a thing, and while I will not discriminate foreign NGO and some boutique NGO fashion. No, everybody is doing a good cause. But I personally get inspired. मैं normal हूँ, मैं कितना कुछ कर सकता था, नहीं किया.
इन लोग हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं. तो इन लोग हम दिव्यांग से भी आगे हैं. वी आर एक्चुअली डिसेबल्ड. Why did we not do this? Why should I wake up after somebody tells me? So, these are the torch bearers, Sarthak and all the people, whether they're working in cancer or any inspiration, blind, visually impaired, they are showing us the way forward. And we are making a business case of sustainability. So I don't have a good stories. We are at the beginning of the journey. But give me 3 years, we'll come back. And thanks to these partner NGOs like Sarthak, we'll have a good story to tell. Thank you, Rohit ji. Thank you very much. आपने इतने सारे एनजीओस की बात की. सार्थक ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है कॉल आइडिया, इंडियन दिव्यांगजन एम्पावरमेंट अलायंस. और हमारा मकसद ही ये है कि जो छोटे हों, बड़े हों, कैसे भी एनजीओ हों, सब लोग कुछ सेवा कर रहे हैं. उन सबको किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पे लाके, और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें तो कोलैबोरेशन है. जितने लोग हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कैपेसिटी नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि लेट्स से प्रपोजल कैसे भरते हैं, टेंडर कैसे भरते हैं, टैक्सेशन का क्या प्रॉब्लम है, वो सब. और तो उसमें कुछ 225 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं सार्थक के साथ. और मैं चाहूंगा कि आप भी ये मैसेज उनके तक पहुंचाएं, ताकि एक तरह का जैसे मूवमेंट बन जाए, और मूवमेंट भी फॉर अ गुड कॉज. ये इसमें बड़ा आपका सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा इस मामले में. Sir, I'd like to add here, we have been partnered with Youth for Job. They are into vocational skill training and employment for, again, Divyang people. We have funded their entire portal thing where they are also aggregating. So what I will do, I will organize a meeting with Dr. Meera Shenoy and the Sarthak team, and we can collaboratively take it further. We are there as partners. What we need is the knowledge, experience and expertise. Nobody knows this landscape better than you. Instead of reinventing the wheel, Sarthak will do something on its own, this thing, and we'll see how we can synergize. Ultimately, more and more people, that is the common goal. We will come together as corporates, as development sector, and collaboratively work out solutions. मैं 1000 लोगों को मदद कर सकता हूँ, वो 2000 को कर सकता हूँ. Can we come together and make it 10,000? A multiplier effect. So definitely, sir, when we started the session, you mentioned that thought did cross my mind. We will do it. Thank you so much. Thank you. Acha, now I'd like to invite another banker. And again, well, you might be competing for customers, but when it comes to CSR and when it comes to working with PWDs, हम लोग सब collaborative होंगे. Ritesh Sinha is corporate responsibility practitioner and the role of head of CSR projects at HDFC Bank. He has served corporates like ArcelorMittal, DLF, Lafarge Cement in multiple functional leadership roles. And one of the main focus areas उनके लिए है इस समय कि local economy और economic resilience rural population का कैसे बढ़ाया जाए. और वो passionate हैं इस मामले में local entrepreneurship के लिए. And he has spearheaded the planning and implementation of कई innovative social enterprises. And he's on the advisory board of various NGOs. He has a postgraduate degree from Xavier's Institute of Social Sciences. Ritesh, आपके पैशन जो आप लोकल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लगाते हैं, वो आपका क्या एडवाइस होगी पीडब्ल्यूडी एंटरप्रेन्योर्स के लिए? फंडिंग तो हमेशा इशू रहता ही है. Can CSR monies help in kickstarting businesses in rural areas? And when I say rural areas, it's very important because rural areas में हमारे कुछ 75% दिव्यांग लोग रहते हैं. तो उनके लिए जॉब्स प्रोवाइड करना इन कॉर्पोरेट्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इतना ज़्यादा एक्सपेंस है नहीं. लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. बाय द वे, एंटरप्रेन्योरशिप का एक पैनल लेटर इन द डे ऑर्गेनाइज होगा. अब आप यहाँ पर थे तो मैंने सोचा आपका भी थोड़ा इसमें आपकी एडवाइस ले लें. रितेश, ओवर टू यू. थैंक यू सो मच मिस्टर भटनागर. पहले आपके इस प्रश्न का मैं कोशिश करता हूँ उत्तर देने का. जो हम लोग एक प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, लोकल इकोनॉमिक एक्टिवेशन, सो एज अगेंस्ट लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां पर एक पूरे प्रक्रिया को फिर एक नई तरीके से स्टार्ट करना रहता है. व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ऑलरेडी देयर, व्हाट इज लेटेंट, एंड बिल्ड एन एंटायर इकोनॉमी अराउंड दैट. तो उसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस के अराउंड जॉब अपॉर्चुनिटीज हो,
entrepreneurial opportunities हो वो identify करके we map all of that and we get people to either train on certain things, start enterprises on these things, and then the economy grows and it becomes resilient. We withdraw and it sustains. क्योंकि ये सबसे बड़ा CSR का चैलेंज रहा है, फंड लेड डेवलपमेंट कभी सस्टेन कर पाता है, कभी नहीं कर पाता है, तो दैट इज समथिंग व्हिच वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ. जो दूसरा पॉइंट आपने कहा सर ऑन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग पीडब्ल्यूडीज, मेरे विचार से बहुत बढ़िया आइडिया है. इट इज समथिंग दैट कुछ प्रोजेक्ट्स में हम लोग कर रहे हैं. सो वी हैव टेकन अप अबाउट 1000 यूथ्स जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं और उसको एक्सेस टू फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट दे आर एबल टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स. सो सिर्फ वो खुद एम्प्लॉयड नहीं हो और भी 10 लोगों को एम्प्लॉय करें. ये प्रोजेक्ट हमने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्टार्ट किया है पिछले वर्ष. एंड I think there are certain percentage of differently abled people also who are getting benefited. तो उनको हम बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, एक बिजनेस को कैसे सस्टेन करते हैं, मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज क्या लगा सकते हैं, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करके इस तरीके का सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. यू राइटली सेड एंटरप्रेन्योरियल कल्चर में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है फॉर द रूरल पॉपुलेशन. और हम लोगों ने टारगेट रखा है कि करीब 1 लाख ऐसे एंटरप्राइजेज अक्रॉस द कंट्री हम अगले 2 से 3 वर्षों में सेटअप करेंगे जो खुद से सस्टेन करेंगे और उनका खुद का अपना बैलेंस शीट करोड़ों में हो, ऐसी हमारी अपेक्षा है. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. ये 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स इज सच म्यूजिक. सब सुनने वालों को कहा, मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग इसके बारे में पढ़िएगा. HDFC के वेबसाइट पे भी इसके बाद इंफॉर्मेशन होगी और मैं रितेश जी से ये कहूँगा कि ये इस चीज़ का वो वहाँ पे आह्वान भी करें ताकि लोग समझ सकें कि किस तरह से HDFC बैंक इसमें काम कर रहा है और उसके हिसाब से अपना रोजगार शुरू करें. अब नेक्स्ट स्पीकर इज दीक्षा सिंह एंड शी इज द ग्रुप हेड CSR of Powerlinks Transmissions, a person or people oriented person 16 plus experience in HR function, mainly from talent management. Her expertise is into setting up and streamlining HR operations with the introduction of new systems and procedures, adhering to best practices, maintaining healthy employee relationships, and creating an amicable and transparent environment. A team player with a passion to perform and deliver results. So, Diksha, we'd like to know कि आपके current achievements of Powerlinks क्या है to bring inclusivity in people with disabilities. आपका सेक्टर थोड़ा डिफरेंट है अभी तक जिस बात हुई, और what are the prospects of a digital ecosystem for ensuring availability of basic services to the disability? Yeah, thank you so much. And it is an opportunity to be here on this platform, listening to the valued speakers who have started from different industries. Tata Power Group, so Powerlinks is a joint venture between Tata Power and Power Grid, and both the parent companies are committed towards diversity and inclusion. There are various steps which has been taken in last 2 to 3 years towards this initiative. And when I say diversity and inclusion, हमारे लिए मैं हिंदी माध्यम रखना चाहूँगी. सबके बहुत सारे हमारे जो यहाँ पे अटेंडीज हैं उनका भी प्लेटफॉर्म के मायने रखकर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर है कि जब हम इंक्लूजन क्रिएट करना चाहते हैं, हम सबको समान माध्यम प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हमें कौन से एफर्ट्स करने हैं इन द ग्रुप to make them a part of a team. So when we come to PWD segment, so Tata Power Group is working on both the sides, including Powerlinks Association is with Sarthak since long, and we have been working on this platform since FY 2018. एंड हमने वोकेशनल ट्रेनिंग और एम्पावरमेंट को लेके काम किया है सार्थक के साथ, और बहुत उसमें देखा कि बच्चे जो दिव्यांग हैं इतने टैलेंटेड हैं, इतने सक्षम हैं, उनका जो सीखने का पैशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, एंड दे आर
not lesser than anyone of else us, and they have been very, very passionate about their learnings, their achievement, and going forward in life. तो इस सब को देखते हुए हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, और हम ये पावर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज व्हिच टाटा ग्रुप इज रिप्रेजेंटिंग. सो फॉर क्रिएटिंग इंक्लूसिविटी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मैक्सिमम जो यूथ है उसको एम्पावरमेंट प्रोवाइड किया जाए विद द सपोर्ट ऑफ आवर स्टेक होल्डर्स, विद द सपोर्ट ऑफ आवर outsourcing agencies, our own company, where in support roles where these people can be placed. So we are working on a 360-degree development cycle where it can be developed from all the sides, because in this era of digitization, the best thing with the technology has come out that everybody can be connected from their home, from their ease out locations. तो हम हर जगह से कनेक्ट करके काम कर सकते हैं. तो द लर्निंग ऑफ कोविड इज दैट इट इज नॉट लिमिटेड टू ऑफिस और इंडस्ट्रीज और टू अ पर्टिकुलर पावर प्लांट ओनली. So there are a lot of other jobs where जो हमारे दिव्यांग team members हैं, वो they can create lot of value, lot of learning, lot of new innovations in the company. And we have seen those examples in last 2-3 years, the kind of work our kids have done who have been placed in various retail chains and other companies. Listening to their success stories, it's an eye opener for all of us. So we are working towards it, and we are looking to it that how we can create a better inclusive environment for everyone, where on same platform we all are working together, we all are learning, growing, and making moves in our career towards the positive development. Thank you. Thank you, Diksha. आपने बात की अबाउट सक्षम बनाने का, और आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि बच्चे जो हैं जो कहने को पीडब्ल्यूडी हैं लेकिन उनका हुनर बहुत अच्छा है. तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप इन चीजों को थोड़ा वीडियो के माध्यम से कैप्चर कीजिए, छोटे छोटे वीडियोस बना के भेजिए, तो हम लोग भी अपने जैसे कैप सारथी ऐप है उसके अंदर उसको पब्लिसाइज कर सकें. और दूसरी चीज, क्योंकि आप जैसे पावर ट्रांसमिशन के सेक्टर से आ रहे हैं, कई लोगों का दिमाग शायद उस मामले में नहीं जाता है. यूजली सर्विसेज पे बात होती है जब एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, लेकिन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इसमें जरा थोड़ा कम लोगों का ध्यान जाता है, स्पेशली पीडब्ल्यूडी के लिए. तो आपके जिस तरह के जॉब रोल्स हैं जहाँ पे पीडब्ल्यूडीज काम कर रहे हैं या काम करने लायक हो गए हैं, तो उनका भी जरा आह्वान कीजिए. तो उसका जैसे जैसे प्रसार बढ़ेगा, प्रचार होगा उनका, तो उस तरह से और लोग भी जुड़ेंगे. तो वो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, एक तरह से होमवर्क है. तो आप हमको जरूर भेजिएगा, and we'll try and publicize as much as possible for everybody's good. And speaker, thank you very much for your for your knowledge on this. Now, my next speaker, let me switch gears from the private to the government sector now. I'd like to invite Dr. Rajendra Gadkari, Director General and CEO, Science and Technology Park, supported by DST, Government of India. It's a not-for-profit autonomous institute hosted by University of Pune. The park acts as a bridge between industries and academia to make available resources and expertise from academia, research and development, labs to industries. इनके पास मास्टर्स डिग्री है बॉटनी में और पीएचडी इन फॉरेस्ट इकोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे. और डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल इस मामले में बड़े इंस्ट्रूमेंटल थे कि सारे इंडियन यूनिवर्सिटीज टेक्नोलॉजी डेटाबेस को वो किस तरह से शोकेस कर सके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए और पोटेंशियल ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज. सो डॉक्टर जगदले, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, एंड इतनी सारी की बात होती है, ऑल दीज ब्लॉकचेन, एआई, एमएल, डीएल, एआर, वीआर, इतने सारे जो आ रही हैं, वो कैसे एम्पावर कर सकती हैं हमारे पीडब्ल्यूडीज को? हाउ कैन दे बी यूज्ड टू मेनस्ट्रीम पीडब्ल्यूडीज? And on the other hand, how can PWDs learn these technologies? Are there any schemes that you'd like to suggest, especially when you're coming from the government side? And be happy to hear your views on this. Over to you. Thank you so much for having me as a panel, because I don't represent industries as most of my earlier speakers
are from. I'm a hardcore scientist, professor, and now a serial entrepreneur myself. And our job is to promote entrepreneurship, and especially in the high-tech domain. And we have set up more than 150 companies and maybe mentored about 1,000 plus companies. Even though I don't represent government directly, but I am very closely working with the government. And we execute a lot of programs of Government of India, of various ministries, including concern with divers, both at state level as well as the central level. Due to paucity of time, I'll just focus on something what we are capable of doing and how we can leverage the resources of the government for PWDs. We have been organizing a lot of grand challenges to develop technologies which will ease the life of divyangs. उसके लिए काफी accessibility के लिए क्या कर सकते हैं? For example, we have come up with one wheelchair which has been awarded Prime Minister's National Award, and which gives accessibility to physically challenged to toilets, and also climb staircase, also the bathrooms, without getting out of wheelchair. Getting out of wheelchair and then having those accessible, it's difficult. So this came out of a challenge that we had. हम एक प्रोग्राम रन करते हैं, एंड उसके लिए फ्रैंकली हमें जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है. जैसे कोई किसी को खुद का बिजनेस शुरू करना है, और काफी लोगों ने उसके बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की है. राजेश्री मैडम से और रंजन चोपड़ा साहब, everybody was talking about entrepreneurship, and we are in that domain. But we are in high-tech entrepreneurship, not necessarily micro entrepreneurship, high-tech entrepreneurship. उसके लिए हमारे 3 प्रोग्राम हैं. एक तो जिसको फुल टाइम एंटरप्रेन्योर होना है, लेकिन खुद की कैपेसिटी नहीं है, फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है खुद को सस्टेन करने के लिए. सो काम कैसे करें? सो उसको हम एक नेशनल चैलेंज लॉन्च करते हैं. उसमें से जो भी सिलेक्ट होगा उसे 30,000 रुपए प्रति महीना हम फेलोशिप देते हैं, और वो फेलोशिप में फुल टाइम उनको खुद के प्रोजेक्ट पर काम करना है. दे आर नॉट अवर एम्प्लॉइज. वो खुद के बिजनेस प्लान पर उन्होंने काम करना है. उसके लिए जो भी चाहिए मेंटरशिप की जरूरत होती है, और सब तरह की मेंटरशिप हम प्रोवाइड करते हैं. एंड बाय एंड ऑफ दिस टेन्योर वो बिजनेस प्लान उनको बनाना है. एक बार बिजनेस प्लान होने के बाद उनके दिमाग में कुछ आइडिया होगी, और उस आइडिया का कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, वो सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हो, तो उसके लिए हम एक 10 लाख रुपए का ग्रांट देते हैं. और उसके लिए जो भी इक्विपमेंट की जरूरत है, आइडिया टू प्रोटोटाइप, और उसके लिए जो टेक्नीशियन की जरूरत होती है, सब हमारा पास निधि प्रयास करके एक सेंटर है, उसमें हम देते हैं. उसके बाद में एक बार प्रोडक्ट बन गया और कमर्शियल लॉन्च करना है, तो उसको हम बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं. और उसके लिए 1 करोड़ तक इट्स सीड फंडिंग इज गिवन. और उसके बाद में आगे जो एक्सेलरेशन प्रोग्राम है, और वीसीज मतलब एंजल इन्वेस्टर्स वीसीज के साथ जोड़ते हैं. ये है हमने अभी 5 या 6 CIII सेंटर्स, जिसी को भी आपने अभी बोला कि हाई एंड ट्रेनिंग, AI/ML और रोबोटिक्स, PLC, स्मार्ट इंडस्ट्री, स्मार्ट ऑटोमेशन, इसके लिए हमने 5 सेंटर्स खड़े किए हैं. और हर सेंटर कोई 25-30 करोड़ रुपए का सेंटर है. वो उसमें सीख सकते हैं. उसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको भी सीखना है वो ट्रेनिंग होगा. गवर्नमेंट की काफी स्कीम्स हैं उसके लिए, फाइनेंस करने की स्कीम्स है, लेकिन उससे हाईटेक जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी. सो एंटरप्रेन्योरशिप. दूसरा हमारा एक प्रोग्राम हम जिससे हम जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का एक प्रोग्राम है कॉल्ड सील. और जो भी दिव्यांग के लिए एंटरप्रेन्योरशिप एरिया में काम करें, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है
इस सीड प्रोग्राम के बारे में सार्थक को मैं कम्युनिकेट करूंगा, भावना से मैं कम्युनिकेट कर लूंगा. It's a science and equity, science, equity and empowerment and development. ये स्कीम है. हमारे पास करीबन 30 तारा टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन फॉर रूरल एरियाज के सेंटर्स है. काफी टेक्नोलॉजी बास्केट तैयार हैं जो रेडी टू कमर्शियलाइज टेक्नोलॉजीज है. जो किसी को भी ये टेक्नोलॉजी लेना है और लोकल एरिया में, रीजनल एरिया में कमर्शियलाइज करना है, उसके लिए कुछ फंडिंग और टेक्नोलॉजी, ये दोनों की सुविधा उपलब्ध है. इसका भी फायदा वो ले सकते हैं. थैंक यू सर. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एक तो अपनी वेबसाइट आप भेज दीजिए जहाँ ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, एंड मे बी वेबसाइट पे अगर आप एक सेपरेट टैब डाल दें कि फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज उनके लिए क्या स्कीम्स हैं, मे बी कोई एक्सक्लूसिव स्कीम है या उसके थ्रू, क्योंकि क्या है कि बहुत लोग अप्लाई करेंगे, हो सकता है कुछ चीज मिस आउट हो जाए एंड फ्रॉम पीपल विद डिसेबिलिटीज, बट अगर वो पीपल विद डिसेबिलिटीज कैन अप्लाई एंड गेट योर अटेंशन तो उनके लिए अच्छा होगा, उनका अच्छा चांस है कि वो मिल जाएगा उनको, मतलब उनको नेसेसरी सहायता मिल जाएगी. और आपके लिए एक क्वेश्चन भी आ गया है, वो मैं आई थॉट आप यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस. वो कह रहे हैं, डू यू थिंक दैट असिस्टिव टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी ग्रांटेड पेटेंट्स because it creates accessibility issues to PWDs, high cost to PWDs? Thus, under Section 3B of Indian Patent Act 1970, it must be prohibited to granting patent for assistive technology. आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, टेक्नोलॉजी लोगों तक जाएगी नहीं जब तक उसमें कोई बिजनेस नहीं होगा. किसी को कुछ तो पैसे कमाने होंगे, उसलिए वो प्रोडक्शन कौन करे. ऐसे है कि हम तो काफी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका प्राइसिंग क्या करना है हमारे ऊपर है ज्यादा. लेकिन क्या होता है, जब पेटेंट फ्री टेक्नोलॉजी होगी तो कोई उसको कमर्शियलाइज करने के लिए लेगा नहीं, और जब कमर्शियलाइज होगी नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो टेक्नोलॉजी पास पेटेंटेड जो टेक्नोलॉजी होती है उसको कंपल्सरी एक लाइसेंस नहीं होता है. बाय लॉ एक एंटरप्रेन्योर को टेक्नोलॉजी कभी देते नहीं है. सो देयर टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू 10 एंटरप्रेन्योर्स, सो एक्सक्लूसिविटी कभी देते नहीं है. सो पेटेंट करना जरूरी है, लेकिन पेटेंट करने के बाद उसका मिसयूज नहीं होगा और वो बाजार में आ जाएगा. सो ऐसे काफी मैं एग्जांपल दे सकता हूं जो ऐसे पेटेंट करने से लोगों का फायदा हुआ है, क्योंकि उसकी कॉस्ट कितनी डिसाइड करनी है वो तो एंटरप्रेन्योर के ऊपर है. सो देयर इज अ होल प्रोग्राम फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज एट अफोर्डेबल कॉस्ट, पर उसके लिए प्रोटेक्शन की बिल्कुल जरूरत है. जो भी कोई मेडिसिन के बारे में होगा, कुछ जो जरूरी है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, उसके लिए कंपल्सरी लाइसेंस होता है और लाइसेंस फ्री भी हो सकता है. सो लेकिन पेटेंट करना जरूरी है. थैंक यू. अच्छा, with this we come to the end of the panel members talk. Now I'd like to take a few questions. One of the questions I've already posed to Dr. Jagdale, and he's given a fair answer for this. And I request him कि आपकी वेबसाइट पे इन सब की इंफॉर्मेशन होगी तो और भी अच्छा रहेगा. आपने 10 लाख रुपए की ग्रांट की बात की, और कैसे मिल सकता है, क्यों किसको मिल सकता है, वो सब चीजें हम लोग अपने कैप सारथी ऐप के थ्रू और उनको पब्लिश करेंगे और दिखाएंगे कि भाई इस तरह से. अभी कॉल्स आर ओपन, सो आई विल पोस्ट इमीडिएटली. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. Now, Ranjan, I have a question for you. There is in the chat box, in the question and answer section, there is Lokesh Kumar has asked this question. Okay, sir, we have a lot of talk about CEOs, but sir, what makes a person a CEO? I mean, what kind of ability is needed for a CEO? I'm talking about all kinds of abilities. So I thought since or skills, you might be the best person to answer this question because you raised the topic and you have a passion for it. आप बताइए. You're on mute. So Atul, did you ask me a question? Yeah. It's in the question and answer. उसमें उससे बोल देता हूँ. लोकेश कुमार का क्वेश्चन है
कि एक सीईओ बनने के लिए क्या एबिलिटीज की जरूरत है, क्या स्किल्स की जरूरत है, और ये बड़े उत्सुक हैं कि he wants to know and maybe he can be a CEO sometime, but आप जरा इनको गाइड कीजिए। एक तो सीईओ का जो रोल है जनरल मैनेजमेंट का रोल है, जो कि हर तरह के स्किल्स, तो फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। अब कई लोग, मैं अपनी बात कहूँ तो आईआईटी जैसे राजश्री मैडम वहाँ से, आईआईटी खड़गपुर से, मैं कानपुर से हूँ, इंजीनियर बने, तो इंजीनियर बनने के बाद बैलेंस शीट फाइनेंस वगैरह कभी पढ़ी नहीं और वो मुश्किल से सीखा। तो लॉज ऑफ फाइनेंस जो होते हैं वो समझना जरूरी है कि मेरी आमदनी मेरे खर्चे से ज्यादा होगी, my income has to be more than my expenses. Collect before you pay. I need to collect money. मेरे पानी के टैंक में पानी होना चाहिए तभी मैं पानी दे सकता हूँ, तो मेरे बैंक में पैसा होना चाहिए तभी मैं दे सकता हूँ। तो मेरे को कलेक्शन में ज्यादा फोकस करना है। तो इसी तरह से फंड्स की यूटिलाइजेशन, कि अगर मैं अपना वर्किंग कैपिटल लेके घर बना लूं, कोई बिल्डिंग बना लूं, कैपिटल इक्विपमेंट में डाल दूं, तो वो गलत बात रहेगी। तो पैसे को यूज कैसे करना है, एक तो ये वाला कैटेगरी हो गया। एक कैटेगरी हो गया टीम बिल्डिंग की, कि मैं टीम कैसे बनाऊं, अच्छे लोगों को कैसे अट्रैक्ट करूं। और एक तो बहुत सारी चीजें, सेल्स का। अब मेरे को बहुत साल पहले याद है कि टाई पहनना नहीं आता था। अब लोग इंडिया में तो पजामा कुर्ता चलता है, बट आजकल तो कोविड के टाइम पे शर्ट पहननी बहुत ओवर ड्रेसिंग हो जाती है। बट जो सेल्स का काम है कि अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जाके बात कैसे करूं। अब मैं चाहता हूं कि सेल्स वाले लोगों को मैं रिक्रूट कर लूं, वो करेंगे काम, तो वो नहीं होता है। मेरे को खुद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी मैं लीड कर सकता हूँ ऐसी टीम को। मार्केटिंग, अब मार्केटिंग का नॉलेज, अब नहीं जी सोशल मीडिया जो है, मैं मन नहीं कर रहा मेरा, या बेकार है सोशल मीडिया। आज के दिन में सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं सोशल मीडिया में हर जगह जा रहा है, लोग देख रहे हैं इसको। और तो वो सीखना और फिर सिखाना अपनी टीम को बहुत जरूरी है। तो सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये तीनों का नॉलेज। और उसके अलावा जो अपना प्रोडक्ट है उसका तो है ही है, प्रोडक्ट के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में जानना। चाहे सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर है, अगर मैं खाने पीने का बिजनेस है उसके बारे में मेरे को जानना। आजकल मैंने अभी आपको बताया शहद के बारे में, कि हम शहद बना रहे हैं देहरादून में, गढ़वाल एरिया में। तो शहद को मार्केट कैसे करेंगे, किस बोतल में डालें, अच्छा कौन से मार्केट में बेचें। न्यूयॉर्क में मेरे को ऑर्गेनिक शहद का अच्छा पैसा मिलता है, मैं नहीं जी न्यूयॉर्क तो बहुत दूर है, मैं कैसे करूंगा न्यूयॉर्क में। तो मैं तो अपने पड़ोसी, या जो आराम से मैं चाहता हूँ घर पे बैठे बैठे मैं दे दूं, तो फिर मेरे को रिटर्न्स नहीं आएंगे बिजनेस में। तो मेरे को वहां बेचना है जहां मेरे को अच्छे रिटर्न मिले। तो ये सारी चीजें सीखनी बहुत जरूरी हैं। और दिमाग और अपने आप को सिखाना। सो एक चीज है कि हम स्कूल कॉलेज में, या चलिए सार्थक की सपोर्ट से दिव्यांग लोगों का काफी अच्छा, ये सीखना बंद नहीं हो सकता, बंद नहीं हो सकता। ये नॉन स्टॉप, जब तक हम जीवित हैं और तब तक ये सीखना, नई चीजों का सीखना, ध्यान रखना। और दूसरी बात जो एक बहुत जरूरी है, हम लोग डूइंग थिंग्स द राइट वे, सही तरीके से करेंगे और टिक मार्क एक्सरसाइज कर देते हैं। सीएसआर में भी टेंडेंसी रहती है कि भाई हमने ये 4 चीजें कर दी, बट डूइंग द राइट थिंग्स इन द राइट वे इज इंपॉर्टेंट। अब राइट थिंग क्या है, तो जो कि जिससे इम्पैक्ट हो, और नीडल जो है, कहते हैं ना सुई आगे की तरफ बढ़े, मतलब हम कोई चेंज लेके आए। तो ये पूरी कॉर्पोरेट दुनिया जो, तो हमारे बिजनेस में जो एंटरप्रेन्योर लोगों ने बोला कि मैं सीईओ बनूंगा, तो सीईओ बनने के लिए अगर आपके बहुत सारे लोग हैं सही तरीके से काम कर रहे हैं, दैट्स नॉट गुड इनफ, नहीं होगा उससे काम। हमें राइट चीजों को करना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बट आई विल बी अतुल जी, मैंने आजकल पहाड़ों में तत्वा हिल्स,
अगर जो सुन रहे हो इस चीज को, ततवा हिल्स कुमाऊं में एक जगह है जहां पर हम ये काम हमने शुरू कर दिया है। आई रन अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स कॉल्ड गुरुकुल। गुरुकुल जैसे पुराने जमाने में होता था, गुरु जी के घर जाइए और सीखें नई चीजें। तो हफ्ते 6-6 दिन का कोर्स है जिसमें सीईओज को जो जरूरत चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, वो मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था। मैं बहुत सालों से सोचता रहा, अजीम प्रेम जी के पास मेरे को असिस्टेंट की नौकरी मिल जाए मैं कर लूंगा, बट वो तो हुआ नहीं। अब तो उम्र चली गई उसकी, और प्रेम जी भी अब बाहर आ गए उससे। तो जो चीज मैंने मुश्किल से सीखी वो मैं सिखा रहा हूँ लोगों को। तो 5 बैचेस कर चुका हूँ, हर महीने एक बैच रन करता हूँ। अभी तक मैं वो टीम कंप्यूटर्स और जान पहचान के लोगों के लिए कर रहा हूँ। आई बी वेरी हैप्पी टू ऑर्गेनाइज वन। ऐसे अगर 20 से 30 लोगों का बैच चाहिए मेरे को, जो सीरियस हो, सिंसियर हो इस चीज में। अच्छा चलो चलते हैं, छुट्टी मना लेंगे, कुछ सीख जाएंगे, वो नहीं। जो वाकई में सीखना चाहते हो, तो मैं सिलेक्ट करके लोगों को लेता हूँ, 25-30 लोगों को, और सवेरे से शाम जो है, और इजी रहता है कुछ ज्ञान, और उसके बाद उसके बारे में सोचना, रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं। और मॉर्निंग वॉक्स, ट्रेक्स पहाड़ों में, वो बहुत आनंद आता है। और तो ये आई बी वेरी हैप्पी टू ऑफर दिस सर्विसेज टू द सार्थक ऑडियंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रंजन। लोकेश जी का एक और क्वेश्चन भी है, वो शायद मैं खुद ही आंसर कर लेता हूँ। उसमें उन्होंने कहा है कि इज इट नेसेसरी के ओनली एन एमबीए और आईआईटीएन कैन बिकम अ सीईओ एंड नॉट फ्रॉम अदर बैकग्राउंड्स? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा, देखिए रंजन जी मेरे सीनियर हैं फ्रॉम आईआईटी कानपुर, और मैंने आई एम कैलकाटा से एंटरप्रेन्योर स्किल्स का भी कोर्स किया हुआ है, लेकिन मैं तो नहीं बना सीईओ और ना ही मैं एंटरप्रेन्योर बना। इसका सबसे बड़ा, जैसे अभी रंजन जी ने कहा ना, कि एक अंदर से एक भावना आनी चाहिए कि मैंने ये करना है। और या जैसे वो शहद बेचने की बात, कि आपके आसपास में शहद बेचना है या न्यूयॉर्क तक पहुंचाना है, तो वो जो फायर इन द बेली होता है ना, जो एक तरह से सेल्फ स्टार्टर स्पिरिट है, वो होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए कोई डिग्री का जरूरत नहीं है, इसकी कोई ऐसा वो नहीं। जैसे ने कहा कि रंजन जी ने कहा कि थोड़ा फाइनेंशियल एनालिसिस आना चाहिए, थोड़ी मार्केटिंग आनी चाहिए, सेल्स आना चाहिए, एंड अबव ऑल ऑफ दिस एक फायर इन द बेली आनी चाहिए। मेरे हिसाब से दैट इज व्हाट मेक्स अ सीईओ। अतुल जी, एक चीज और, आप फायर इन द बेली कह रहे हैं कि आग होनी चाहिए अपने अंदर, मैं थोड़ा सा उसको बोलूंगा, थोड़ा पागलपन भी चाहिए कि नहीं, कुछ कुछ करना है, और डिसकंफर्ट जोन में हम लोग ना बड़े कंफर्ट जोन में रहते हैं। चलो थोड़ा सा कर लिया काम, थोड़ा सा अपने आप को खींच लिया। स्ट्रेच करना ना, अपने आप को स्ट्रेचिंग करना, रबड़ बैंड को जैसे स्ट्रेच करते हैं हर चीज में, चाहे फिजिकल स्ट्रेचिंग हो, मेंटल स्ट्रेचिंग हो। और हम कह सकते हैं अरे मेरे में ये प्रॉब्लम है, इस चीज की कमी है, मैं देख नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता हूँ। तो वो सही है, वो रियलिटी है, बट रियलिटी के आगे जाना, पॉसिबिलिटी वाली दुनिया में, कि वो ठीक है, चलो ये भगवान ने जो दिया है, इन्हीं पत्तों से खेलेंगे, इन्हीं पत्तों से खेल के जीतेंगे और करेंगे, इससे रुकेंगे नहीं। जिसको बोलते हैं ना अनस्टॉपेबल, रुकना नहीं है। थैंक यू, ये सही बात है। पागलपन मतलब कि उसके मायने दूसरे होते हैं, लेकिन आपने जो मायने समझा है वो सही बात है। वही पागलपन एक चाहिए कि ये तो मैं करके रखूंगा और मेरे जो पत्ते हैं उसी के पत्तों से मैं खेलूंगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक क्वेश्चन सारे पैनल के लिए है, लेकिन स्पेशली फॉर आवर कॉर्पोरेट गाइज, कि भाई एवरी डिस्टिंग आई विश टू वन क्वेश्चन फ्रॉम शिवम कुमार. I wish to understand how is the representation and opportunity for PWD in corporate changing. So maybe Rajshri, maybe you can go in first and then Sure. Yeah. others. See, definitely it's changing a lot for the good. Okay. I mean, I think if not, the pandemic has actually made it even more easier for people with PWD, because working from home has made it a lot more easier. What was certain kind of roles and other things which people couldn't imagine, people are imagining now, right? So yeah, certainly it is changing. But if your question is it changing enough to the speed at which we need it? I would say a long way to go. Okay, to be very honest about it. It is certainly changing, but the rate at which it changes, it needs to go a long way. Thank you. Anyone else would like to say anything?
तो ये एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि जो हम लोग कॉर्पोरेट में कई बार कहते हैं कि हमारा काम है कुछ बेचने का, अपने प्रोडक्ट लाइन, चाहे गाड़ियां बना रहा हूँ या इंश्योरेंस की कंपनी है या बैंकिंग, या कई बैंक वाले थे। हम ये सोचते हैं कि सीएसआर एक डिपार्टमेंट का काम है या एक बंदे का काम है हमारी कंपनी में। लीडरशिप का जो रोल है, जैसे मेरी कंपनी में तो ये मेरा काम है और मैं उतना ही महत्व इसको दे रहा हूँ जितना सेल्स को या मार्केटिंग को देता हूँ। तो अगर ये जितने प्रोजेक्ट्स ये कर रहे हैं, और सुमित है, अभी मैंने बताया कि हमारे फाउंडेशन को जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ साथ मिलके ये करना, तो मेरे को लग रहा है, एक तो जैसे किसी और ने कहा कि पता नहीं किस गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, किसने इसको सपोर्ट किया, सीएसआर वाला काम जो किया बहुत अच्छा किया ये काम। एक तरह से वो प्रेशर आ गया कॉर्पोरेट्स पे कि भाई ये पैसे, अच्छा पैसे तो इन्वेस्ट करने ही है, पैसों के साथ जो टाइम है, समय है सीनियर मैनेजमेंट का, हमारे ऐसे लोगों का, वो बहुत जरूरी है। और वो सब लोग दिल से काम नहीं करते हैं इतना, बट दिल से जुड़ जाएंगे, मेरे को जो लगता है, मेरी ऑप्टिमिज्म है कि बड़ी कंपनीज, कई लोग हैं इस पैनल पे भी, जो सीईओज हैं उनको बीच में खींच के लाना, जो बोर्ड लेवल पे बोर्ड को इन्वॉल्व करना सीएसआर में, नॉट एज वन टिक मार्क एक्टिविटी कि भाई हमने कर दिया, बट। और दूसरा जो है ये किसी और ने कहा इस पे, वसुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड बीइंग वन फैमिली, और ये जो प्लेनेट में हम सोचते तो हैं दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, एक्चुअली उसका रिटर्न बहुत ज्यादा आता है। हम लोग कई बार कहते हैं भाई हम ये बेचने में लगाएंगे इतना टाइम तो रिटर्न मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बट नॉन आरओआई वर्क जो है, जिसमें कि हम फोकस नहीं करते रिटर्न आरओआई पे, और सीएसआर टिपिकली उस कैटेगरी में मानते हैं हम। पर अगर हमने जंगल लगा दिए, फॉरेस्टिंग कर दी, तो प्लेनेट इंप्रूव हो गया, और उसके दुआएं, जितने लोग हैं सार्थक में, इतनी जो दुआएं मिलती हैं, वो यही जन्म नहीं, हमारा अगला जन्म भी हमने प्लानिंग कर ली इसके लिए। Thank you. ये That's चीज लोगों a wonderful thing. But हाँ, लोगों के अंदर जो सार्थक जो ये काम कर रहे हैं, और हम लोग जितने पैनलिस्ट हैं यहाँ पे, हम अपनी नेक्स्ट लाइफ का, कई लोग नहीं मानते होंगे, मैं तो मानता हूँ नेक्स्ट लाइफ, कई लोग बोलेंगे अरे ये तो थ्योरेटिकल चीज है, अगले जन्म का पुण्य कमा रहे हैं हम अभी। Thank you. Thank you, Ranjan. This is very important, and I think Ranjan brought it out very well कि भाई ये जो नॉन आरओआई का काम है, उससे जो बेहतर वर्ल्ड हमारे आसपास बनेगा, वही हमारी सबसे बड़ी देन होगी. And I think that's, with this I would like to now conclude. I'd like to thank all my panelists, Shri, Diksha, Sharmeen, Rohit, Ritesh, Rajendra, and Ranjanji for their participation. And last but not least, I'd like to compliment Nazmeen. वो पिछले 1.5 घंटे से या 2 घंटे से लगातार अपने हाथों के थ्रू सारा कम्युनिकेशन कर रही है. हम लोग तो पॉज भी ले लेते, लेकिन वो डायरेक्टली ऑन all the time communicating to all of us and our PWD friends and the viewers. Thank you, everyone. Have a great day. Thank you so much. मैं तेरे पास CEO ऑफिस वाले का पासवर्ड है,